In this video, we are going to talk about search engine and web browser. What is search engine and web browser? First is search engine. A search engine is a kind of website through which user can search the content available on the internet. For this purpose, users enter the desired keyword into the search field. Then the search engine looks through its index for the relevant web pages and display them in the form of a list. Okay? So basically यहाँ पर कहने का मतलब ये है सर्च इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो सर्च इंजन एक वेबसाइट की तरह कार्य करता है। जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम ले कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो हमने डिजायर एक कीवर्ड टाइप एक सेंटेंस लिया और उसको हमने टाइप किया सर्च करने के लिए, रिसोर्स हमें प्रोवाइड करवाने के लिए उसने रिलेवेंट कीवर्ड को मैच किया वेब पेजेस से और हमें एक लिस्ट दे दी हमारे कंटेंट के रूप में, या फिर जो भी हमें नीड थी उसके हमें एक कंटेंट यहाँ दिखा है इन द इंडेक्स फॉर रिलेवेंट वेब पेजेस एंड डिस्प्ले देम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। जो भी कंटेंट हमने सर्च किया था वो हमें एक लिस्ट के फॉर्म में दे दिया। आगे बढ़ते हैं। The internet is a huge source of information and resource, and to access the resource from the internet there are some kinds of software. This software is known as a search engine. Okay? बात करते हैं कुछ important search engines की जो हम अपनी डेली लाइफ में मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर यूज करते हैं। आइए देखते हैं, आप इनसे परिचित हैं। Some of the popular ones are, first is Google, okay, second is Bing, YouTube, Yahoo, DuckDuckGo, ask.com, Yandex, Bhanu, ओके। कमेंट में लिखिएगा आप इनमें से कौन कौन से नामों को पहले से ही जानते थे, कौन कौन से सर्च इंजन्स को पहले से ही आप पहचानते थे। ओके, देयर आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सर्च इंजन। जो सर्च इंजन होता है उसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, आइए देखते हैं। मेन थ्री कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन इज क्रेवलर, इंडेक्स, सर्च इंजन, ओके, sorry, search algorithm. Okay, now let's talk about web browser. What is web browser? The web browser is an example of application software. Web browser is an example of an application software, okay, that is developed to retrieve and view the information from web pages or HTML file present on the web server. तो वेब ब्राउज़र होता है वो वेब पेजेस और HTML फाइल से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव और व्यू करने के लिए डेवलप्ड किया गया था। ओके, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वाज इन्वेंटेड बाय सर टिम बर्नर्स-ली इन 1990। फर्स्ट वेब ब्राउज़र डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया था? टिम बर्नर्स-ली इन 1990 में किया गया था। ओके, एंड द वेरी फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र वर डेवलप्ड इन 1993। इसे याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र आर डेवलप्ड इन 19, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र आर डेवलप्ड इन 1993। ओके, is named the Mosaic. First web browser is Mosaic. Yeah. After that, various web browsers were developed. Some of them are Navigator, which is developed by Netscape Communication. बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं वो Netscape Communication के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं जो आई होप आपको इनके नाम पहले से ही पता होंगे। So first is Microsoft Edge, second is Google Chrome, third is Mozilla Firefox, fourth is Opera Mini, five is Apple Safari, six is Internet Explorer, and seven is Chrome. Okay, the main characteristics of web browser are
आइए देखते हैं। It consists of GUI. GUI means graphical user interface. Okay. It contains the search box where the user can type the address or URL. Pages style can be static or dynamic. जो पेज का जो स्टाइल होता है वो स्टैटिक और डायनेमिक हो सकता है. It depends upon the interactivity and the formatting. Okay, I hope you understand. TCP/IP and HTTP protocols are used by web browsers. ओके, जो TCP/IP मॉडल्स होते हैं, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो वेब ब्राउजर पे वर्क करते हैं. ओके ओके, नाउ लेट्स talk about the difference between search engine and web browsers. Okay, first parameter is definition. A search engine is used to find the information in World Wide Web and display the result at one place by returning web pages available on internet. जो सर्च इंजन होता है वो क्या करता है कि इंटरनेट पे हमारे जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसके माध्यम से हमारी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है और इंफॉर्मेशन मिलने पर उसे डिस्प्ले कर देता है रिजल्ट के रूप में जो वेब पेजेस पे अवेलेबल होते हैं. ओके, बात करें वेब ब्राउज़र की, सो वेब ब्राउज़र uses the search engine to retrieve and view the information from web pages present on the web servers. वेब ब्राउज़र वेब सर्वर्स पे जाके देखते हैं कि क्या हमने जो सर्च किया है वो है. अगर उससे रिलेटेड कंटेंट अगर वेब ब्राउज़र्स को मिलता है तो वे हमें आउटपुट दे देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम सर्च इंजन का यूज़ करके वेब ब्राउज़र्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सर्च इंजन इज इंडिपेंडेंट to gather information regarding several URLs and to maintain it. ओके, सर्च इंजन इंडिपेंडेंट होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए और जो URLs होते हैं उनको मेंटेन भी करता है. ओके, वेब ब्राउजर आर इंडिपेंडेंट टू डिस्प्ले द वेब पेजेस ऑन द करेंट URLs अवेलेबल एट द सर्वर. सर्वर से जो भी URL होते हैं वेब ब्राउजर उसके लिए इंडिपेंडेंट होता है हमें रिजल्ट शो करने के लिए. थर्ड पैरामीटर इंस्टॉलेशन. सर्च इंजन नीड नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन आवर सिस्टम. जो सर्च इंजन होते हैं वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होते हैं, बट मैनी वेब ब्राउजर्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन आवर सिस्टम्स. बहुत सारे वेब ब्राउजर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेसिबिलिटी. फोर्थ पैरामीटर, द सर्च इंजन इज एक्सेस्ड थ्रू अ वेब ब्राउजर. एक सर्च इंजन जो है वो वेब ब्राउजर के द्वारा एक्सेस किया जाता है और बहुत ही रेयर केसेस में तो ऐसा होता है. टिपिकली ऑल डिवाइसेस आर सपोर्टेड. जो वेब ब्राउजर होता है उसे सभी डिवाइस सपोर्ट करते हैं. ओके, फिफ्थ पैरामीटर कंपोनेंट्स. द सर्च इंडेक्सर, क्रेवलर एंड डेटाबेस आर द थ्री essential components of a search engine. A web browser uses a graphical user interface to help user have an interactive online session on the internet. जो वेब ब्राउजर होता है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर्स को इंटरनेट से इंटरेक्ट करने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिपेंडेंसी. A search engine is not required to open the browser. This means that the search engine is reliant on the browser. A browser is required to open a search engine. This means that the browser is not reliant on the search engine. एक वेब ब्राउजर को सर्च इंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है ओपन होने के लिए. ओके, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सर्च इंजन है वो वेब ब्राउजर पे डिपेंड करता है, बट जो वेब ब्राउजर है वो सर्च इंजन पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. द एडवांटेज. द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्च इंजन आर टू गेट द कंज्यूमर ट्रस्ट, ट्रैकेबल रिजल्ट, जनरेट्स targeted traffic, sustainable
clicks and grow your small business. Okay, this is some advantage of search engine. Now web browser. The web browser advantage of using web browser are open standard, security, sandbox, robust GUI, and simple networking. Okay, so those are the advantage of the search engine and web browser. Now let's talk about the one example we already discussed in previous. DuckDuckGo. This is the example of search engine. Baidu and Google Chrome is the most popular example of search web browser. Sorry, web browser. Okay. ऐसी more information जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए भानु टेक फॉर यू. ओके, बाय बाय, टेक केयर.